This was the numerical which we did last time. Okay, the situation was there were 4 territories and you had 4 salesmen to be allocated there. All the salesmen had different capabilities and their capabilities was actually provided in terms of proportion. At the same time, they had 4 territories and all the territories were having different sales potential. So based on that, we were supposed to actually allocate the salesman to various territories. What we did was we first worked out the sales potential matrix, correct? So it gave us how much sales is possible in different areas depending upon if I allocate salesman A to a territory 1, 42,000. If I allocate salesman B to territory 1, 30,000, salesman C 30,000 and salesman D 24,000. Okay. So the question was basically about maximization and the method that we had seen is about minimization. So what we did was the first step was if the salesman A is the maximum sales that we are able to generate is 42,000. So what we did was how much is the opportunity loss, okay, if as compared to the maximum sales. So 42,000 was the maximum sales. In this cell, if I am able to achieve only 35, that means I am short by 7,000. In this case, I am short by 14,000. Okay, 42 minus 28, that is 14. And that is the reason why you subtract all the elements in the cell by the maximum possible. So what you get is an opportunity loss matrix. Okay, and this opportunity loss matrix can be minimized. इसको minimization का मतलब क्या हो गया? I am trying to minimize my opportunity loss. Correct? If I am minimizing my opportunity loss, automatically my sales will get maximized. Are we clear up to this? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Okay. Yes, sir. Now, there are multiple methods of converting it into an opportunity loss matrix. Some people even do multiply the entire matrix element by -1. So when you multiply all the elements by -1, what will happen is -12 will be highest as compared to -42. Correct? Correct, Yes, no? sir. Yes, sir. -12 will be higher as compared to -42. Okay. So what is going to happen is now if you start uh, start applying the method for minimization, even that will work. So there are multiple ways of doing things. One, either you can minimize using by multiplying the matrix by -1, or you can subtract all the elements from the highest element in that particular matrix. Then the next step is we will start with either row minimization or column minimization. Correct? Yes, no. Yes. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Here what we have done is row minimization, then column minimization. Once you are through with it, what you do is you
start, you have already done all the row minimization, column minimization. You will start with allocation. Again, when we talk about allocation, you can start doing it either column wise or row wise. Here we started row wise. So first row we made an allocation. Second row ka jo zero tha, that got cancelled because it was in the same column. So all the zeros in the same column will get cancelled. Cancelled means will be omitted for allocation, for future allocation, correct? Second row didn't had a zero, third row didn't had a zero, then fourth row I had first zero, then another two zeros. So I just skipped it. Then I started doing it column wise. Okay. So column wise, first column was already having an allocation. So skip that. Second column I came, there was only just one zero. So we will make an allocation. Automatically all the zeros in that particular row will get cancelled. That means they will be omitted for future allocations. After that, I didn't had any zeros, neither in column 3 nor in column 4. फिर उसके बाद में क्या करते हैं? What would be the next step? Least uncovered element. We'll Sir, start with theta. Theta. before theta, we need to cover all the zeros by minimum number of lines. Correct? So उसमें दो मेथड है, आप कोई भी मेथड यूज कर सकते हो. वन इज आइडेंटिफाई मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरोस इन अ रो और इन अ कॉलम एंड ड्रॉ अ स्ट्रेट लाइन अक्रॉस. ओके, एक बार वो कवर हो गया तो फिर नेक्स्ट नंबर ऑफ जीरोस देखने का, एंड दैट इज हाउ यू विल कीप ऑन ड्रॉइंग लाइंस टिल द टाइम यू हैव कवर्ड ऑल द जीरोस. देन यू विल आइडेंटिफाई थीटा फ्रॉम द अनकवर्ड सेल्स. करेक्ट? Yes, sir. इसकी जगह पर आप एक और काम कर सकते थे कि यू कैन start tick marking the unallocated row. फिर you will tick mark the column bearing zeros in that tick marked row. उसके बाद में next is you will tick mark the row containing allocations in the tick marked column, and then you will start drawing lines. How will you draw? किसी को याद नहीं है? Sir, actually, like Sir, unmarked rows and marked columns. Perfect. You will draw lines through unmarked rows and marked columns. किसने जवाब दिया था ये? Sir, Riddhima. Riddhima. Very good, Riddhima. Okay. So that is how you will go about it. After that, once you have drawn, you are through with all the lines, no further lines are left out. So you will identify theta. Okay. So theta value क्या होती है? How do you identify theta? for the least uncovered cell. So Least the number. small, yes, The the least smallest uncovered. number. Yeah. Very good. Uncovered The cell. least uncovered cell will be identified as theta. फिर theta का क्या करते हैं? So then we subtract the value of theta from the uncovered numbers and add it on and add them on the corresponding cells. The And intersection cell. Sir, intersection of line. intersecting. If it is Intersecting intersecting, The then we will cell add. and Okay. If it is uncovered, then we'll covered will subtract. less. Yeah. And which are covered, we'll leave it as it is. And are not. Very good. Very good. एक बात बोलूं, जब आप लोग ऐसे जवाब देते हो ना, उस वक्त अच्छा क्या लगता है मालूम है? उसमें लगता है कि भाई हमने जो मेहनत की was worth it. Okay. Thank you for the support. So you will identify theta, you will subtract theta from all the uncovered cells,
you will add it at the intersection. Okay, you will, the ones which are covered under the lines, those cells will remain as it is, except the intersection cells. Okay, उसके बाद में एक्चुअली थीटा इंडिकेट क्या करता है? व्हाई डू वी वांट टू आइडेंटिफाई थीटा एंड डू दिस? हम लोग कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं ये सब कुछ? पहले रो मिनिमाइजेशन किया, कॉलम मिनिमाइजेशन किया. First, initially, the row minimization, column minimization was done to identify zero. Zero means least cost cell. Correct? अब उसके बाद में हम लोग थीटा थीटा क्यों निकाल रहे हैं? So for further identification of zeros. Next least cost cell. If I am not able to make allocation with the least cost cell, then I try to identify the second least. और जो पहले वाला उसमें जो एक conflicting zero रहता है, उसमें हम ऐड कर देते हैं so that that conflict will not come again. ओके, तो वो जीरो की जगह पर 1 में या 2 में, वॉट एवर बी द थीटा वैल्यू, उसमें कन्वर्ट हो जाता है. करेक्ट? आर यू अंडरस्टैंडिंग द लॉजिक? Yes, sir. तो मेरे को एक Yes, डाउट sir. है. हाँ बोलो. जैसे कि एक क्वेश्चन था कल किया था मैंने, तो उसके अंदर ना जैसे कि रो और कॉलम मिनिमाइजेशन करके जो हर 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 जैसे फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ में हर किसी में ना हर उस पे जैसे ए बी सी डी उस पे हर किसी पे जीरोस आ गए थे. ओके, तो उसके बाद भी वो जो अपन जीरोस को कैंसिल करते हैं, जो मतलब मैक्सिमम जिस पे जीरोस होते हैं उसको कैंसिल करते हैं, वो सब कुछ करना है मतलब, क्योंकि वो आ गया. अगर आप see, you have to keep on doing it until and unless you have got allocations, one allocation in every row and every column. अगर एक भी आपका बाकी है तो आपको उसको करते रहना है. राइट. ठीक है? ओके ओके सर, ओके. So we keep on repeating the iterations. और एक चीज आप देखोगे, साइन ऑफ ऑप्टिमैलिटी ऑल्सो. अगर हम ये पर्टिकुलर इसमें सारे जीरोस को अगर मुझे कवर करने होंगे, डू यू नो हाउ मेनी नंबर ऑफ लाइंस आई विल रिक्वायर? So equal to the number of rows and columns. परफेक्ट. इसमें नंबर ऑफ रोज एंड कॉलम्स आर इक्वल, सो इक्वल टू द नंबर ऑफ रोज और इक्वल टू द नंबर ऑफ कॉलम्स. आइदर ऑफ द आंसर वुड बी राइट. वेरी गुड. किसने बोला था ये? So Shraddha. श्रद्धा. मुझे अच्छी बात ये लग रही है कि जो लोग रेगुलरली आंसर करते थे उनके अलावा भी मुझे कुछ कुछ नए नाम मिल रहे हैं. गुड. अभी भी आप में से कितने लोगों को लगता है कि स्टिल इट्स मैथ्स? कैन यू प्लीज रेज योर हैंड्स? आई वुड लाइक टू सी दैट. अच्छा, किसी ने हाथ रेज नहीं किया या एक दो लोगों ने हाथ रेज करके हटा दिया? आई वुड लाइक टू सी देयर हैंड्स रेज्ड. कोई भी नहीं. वेरी गुड. सो माय पर्पस इज गेटिंग सॉल्व्ड. ओके, यहां पर तक में एटलीस्ट एक चीज तो क्लियर हो गई. It has got nothing to do with maths. It's pure logic. Okay, it's pure logic. Is there anybody who disagrees? डर के मारे हाथ नहीं ऊपर कर रहे हैं क्या? अच्छा,
Another question. How many of you are afraid of me? Now, this can be taken up like this. Either nobody is afraid or everybody is so afraid that they cannot raise their hands also. ऐसे पूछोगे तो कोई बताएगा क्या सर? क्यों? बिंदास पूछ सकते हैं, उसमें क्या दिक्कत है? ये पूछ तो सकते हैं बताने के बाद. अच्छा, चलो ठीक है, ठीक है. मैं फिर बाद में अलग से एक दो लोगों को खुफिया तरीके से जासूसी स्टाइल में पूछूंगा. ओके, सो व्हाट विल डू इज, आई होप जो लोगों का पीछे भी छूटा होगा, अभी हमने जितना भी कुछ किया उसमें सब कुछ रिवाइज हो गया होगा. ओके, सो विल टेक अप द नेक्स्ट न्यूमेरिकल और अब आपको कुछ नए मेथड सिखाते हैं. ओके, चलो इधर के भाई. This one. This question says, Weldon Company has taken the third floor of a multi-storied building for rent with a view to locate one of their zonal offices. There are 5 main rooms in this to be assigned to 5 managers. Each room has its own advantages and disadvantages. Some have windows, some are closer to the washrooms or to the canteen or secretarial pool. The rooms are of all different sizes and shapes. Each of the 5 managers were asked to rank their room preferences amongst the rooms. 301, 302, 303, 304, 305. ये पढ़ के ऐसे लगता है जैसे हमारे कॉलेज में वो क्लासरूम के नाम है. ओके, their preferences were recorded in the table as indicated below. So ये उनके preferences है. M1 has given a preference for 302. That was his first preference. 303 is the second preference. 304 is the third preference. He doesn't want any other room. ये 3 मिलेगा तो ठीक, नहीं तो रूम नहीं चाहिए. Okay. M2 has given preference for 4. M3 थोड़ा सा flexible आदमी है. He gave preference for all. Okay. M4 4 and M5 3. Most of the managers did not list all the 5 rooms since they were not satisfied with some of these rooms and they have left these from the list. Assuming that their preference can be quantified by numbers, find out as to which manager should be assigned to which room so that their total preference ranking is minimum. Now, this situation is basically related to a situation what admin guys as well as the HR guys face. क्योंकि जब कोई न्यू रिक्रूट होता है तो उसको भी बैठने के लिए लोकेशन वगैरह वो सब कुछ डिफाइन की जाती है ना. ओके, सो अब ये बड़े बड़े मैनेजर्स हैं, इनको केबिन दिया जा रहा है and these cabins are numbered as 301, 302, 303, 304 and 305. Now you as an HR have to define कि किसको कौन सा रूम्स आप देंगे. How will you approach it? So we'll rank them accordingly, and the ones which are not ranked, we'll give them the highest rank. Okay. आप उनको रैंक करोगे, किसको रैंक करोगे? The room number, sir, 301, 302, वैसा. ठीक है, तो आपका टेबल्स में रोज क्या रहेगा, कॉलम क्या रहेगा? Sir, rows will be rows will be 301, 302, 303, 304, 305, and columns will be M1, M2, M3, M4. ठीक है. What we are going to do is, this is your
preference table. What we are going to create out of it is and here we will have our rooms. Fine. Then we'll have to put the preference table for M1. 302 is the first preference, 303 is the second, 304 is the third. For M2, 302 is the first preference, 304 is the second, 305 is third, and 301 is fourth. What about M3? 303 is first, 301 is second, 304 is third, 305 is fourth, and 302 is fifth. M4, 302, 1, 305, second, 304, third, then 303, fourth. 301, first, 302, second, 304, third. Sorry. कहीं पर अगर मैं कुछ गलत कर दूं तो please do let me know so that I can correct it in the very beginning itself. Okay. Sir, 304 in the M5 will be 3. Oh, हो गया. Thank you. Welcome, sir. Okay. So now, if we are doing it manually, okay, so we will put here M here. अब ये इसको जानबूझ के थोड़ा सा अलग कलर में करता हूं so that I am able to easily see it. Fine. उसके बाद में this is my charting table with optimize. This is my charting table or assignment model. Okay. Now after this, पहला काम क्या करेंगे? Row minimization. Correct. So let us say यहाँ पर डालते हैं मेरा step 1. Step 1 was model construction. ठीक है. Step 2. Step 2 would be row minimization करना है, column minimization करना है. What would you prefer? Row. Sir, row, sir. कुछ ऐसा स्पेसिफिक प्रेफरेंस है क्या कि रो करना ही है? No, sir. अच्छा, No specific, but as for our comfort. चलो कोई बात नहीं. मैं आपको बताऊं, आप लोगों को रो मिनिमाइजेशन ही क्यों पहले दिमाग में आया? Any idea? Because we used rooms for the rows. नहीं, मैंने ये वर्ड इतने सबसे बार पहले बोला है
कि वो अभी आपका टॉप ऑफ द माइंड पे आ गया है, और हर बार हमने पहले रो मिनिमाइजेशन, कॉलम मिनिमाइजेशन, रो मिनिमाइजेशन, कॉलम मिनिमाइजेशन, और मैंने उसको इतने बार हैमर कर दिया हूं कि अभी वो आपके दिमाग में पहले रो मिनिमाइजेशन आ रहा है। आप ये चीजों को अगर आप ऑब्जर्व करना शुरू करोगे ना, when you are communicating with somebody, okay, if you want something to get hammered into their head, वो चीज को कई बार यूज करना है रिपीटेडली आफ्टर अ वाइल, बट ऐसा नहीं कि उसके सामने जाप करना शुरू कर दो इन ए रेगुलर कन्वर्सेशन इटसेल्फ। जैसे आपने ऑब्जर्व किया होगा, कई लोगों का हैबिट रहता है कुछ एक वर्ड बार बार यूज करने का, वो अनकॉन्शियसली होता है, बट कुछ समय बाद में सामने वाला जब उसके बारे उसको याद करता है तो वो वही वर्ड फट से पहले याद आता है। सो वी स्टार्ट क्रिएटिंग इमेज। सो जो कंज्यूमर बिहेवियर और कंज्यूमर साइकोलॉजी है ना, वो सब चीजों को भी अगर आप काम में लाओगे तो यू विल बी एबल टू लर्न थिंग्स मच मच बेटर, मोर देन व्हाट इज बीइंग टॉट। ओके, अब आप ये भी बोल सकते हो कि इट हैज गॉट नो मीनिंग हियर, फाइन। चलो, we'll start with row minimization. What is the least value along the row? Sir, 1. 1. 1. If I subtract 1 from m, what am I going to get? M minus 1. M minus 1. Okay. Is that going to change anyhow? No, sir. If I subtract anything from m, is the value of m going to reduce? It will not, it will reduce negligibly. Okay. So m minus 1 will remain as m only. What about 4 minus 1? 3. 2 minus 1? 1. 1. M minus 1? M. M and 0. And 0. Let us look at this one now. इस रो में क्या है लीस्ट वैल्यू? 1. 1. So 1 0. minus 1? 0. 1 minus 0. 1? 5 0. minus 1? 4. 4. 4. 1 minus 1? 0. 0. 2 minus 1? 1. 1. Very good. Least value in this row? 1. 1. 1. So 2 minus 1? 1. M minus 1? M. 1 minus 1? 0. 0. 4 minus 1? 3. 3. M minus 1? M. M. What about here? Least value? 2. 2 So plus 3 2. minus 2? 1. 1. 1. 2 0. minus 0. 1. 1? 1. 1. 1. 1. What is the least value in this row? 2. Sir, 2. 2. So m minus 2? M. 1. Sir, 1 1, 2. 2, 0. and M. 0 and M. and m. Do we have zeros in all the columns? Yes, Sir, sir. Yes, in sir, we have. 304 M2 it's 1 now. Sorry? In M2 in 304. No, it's Okay. 0. It's It would be 0. 0. Value is 2. If you subtract 2 from 2, it would be 0. There is 1 in that. Okay, that's 0. Okay. हाँ, Yeah. ठीक है. Okay. Going forward, do we need to do column minimization now? Sir, no need. Because No we are need, getting each 0 in every column. because we have already got zeros in every column. So even if we do column minimization, it will not change the cells. Now, अब आप इधर पर क्या करोगे? सबसे पहले सीधा एलोकेशन शुरू करोगे. Yes, sir. So चलो इधर पर से वो गोले वगैरह उठा करके ले आते हैं.
थोड़ा सा अपना टाइम बचेगा. Fine. So first row, we can directly just go ahead with allocation. Yes, no? कर Yes, सकते sir. We हैं? can directly. Yes, sir. चलो इसको थोड़ा सा छोटा करना पड़ेगा, कुछ ज्यादा ही बड़े हो गए हैं. Fine. So second row में क्या? So we 305 में leave करेंगे the सर. second one. So leave the second one. Third row, Sir, we will do. M3. Yes, sir. very good. So third row, we have got only 1 0, so we'll simply make an allocation there. What about fourth row? M2. 1 0, so we'll make an allocation there. What about fifth row? Sir, M4. M1 302. So then, M4. Yes. yeah, M1 and M302. Yes. अभी कॉलम वाइज शुरू करेंगे तो अपना anyway ये वाला पहले कैंसिल हो जाएगा, मैं Yes, कैंसिल sir. करना. Cancel हो जाएगा. ठीक है, ये कैंसिल हो जाएगा. इवन M4 वाला कैंसिल होगा सर. ये वाला भी कैंसिल हो जाएगा. अभी हमको सिर्फ एक ही जीरो है यहाँ पर, so we can Yes, just sir. simply. Have we got allocation in all the cells? Yes, sir. Yes, sir. So ये सबसे आसान प्रॉब्लम था, है ना? Yes, sir. Yes, sir. The problem was allocation was restricted in some of the cells. Correct? Yes, sir. अब इसको हम लोग ना बहुत आसानी से ऐसे ही कर सकते थे, कुछ भी करने की जरूरत ही नहीं थी. ओके, हमने इतनी जो मेहनत की ना, इसकी ऑनेस्टली जरूरत नहीं थी. Now what I am going to show you is ये मेथड किसी भी बुक में नहीं मिलेगा. Any idea? ठीक है, बिफोर वी गो अहेड लेट अस सी अपने को प्रेफरेंस वैल्यूज कितना आ रहा है. M5 का 3, उसको 301 उसको क्या मिला? 301. तो इसका फर्स्ट प्रेफरेंस है. करेक्ट. फिर M4 को 305 मिला है, इसका सेकंड प्रेफरेंस है. M3 को 303 मिला है, दैट इज द फर्स्ट प्रेफरेंस. तो 1 2 1 टोटल 4 हो गया. फिर M2 has got 304, which is second preference. Okay. And M1 has got 302, which is first preference. Total preference values, if we count, it comes to 7. Okay. अभी उसने बंदे ने क्या किया आपको वो बताता हूँ. उसने पहला फर्स्ट प्रेफरेंस देखा, सबका फर्स्ट प्रेफरेंस में 302 302 303 302 301. तो उसने बोला भाई 2 लोगों का यूनिक है, इन दोनों को दे दो. ओके. अब 301 आपने दे दिया इसको, तो ये दोनों का तो प्रॉब्लम सॉल्व हो गया. अभी इधर पर देखने का. ओके. 303 इसको दे चुके हैं, तो इसको तो अभी ये देने की जरूरत नहीं. बट इधर पर इन लोगों ने क्या मांगा है? 304 एंड 305 विच आर डिफरेंट. सो make those allocations. Now he is left out with 302. Give it to him. Done.
नहीं कैसा समझा लग रहा है? सर। कैसा फील कैसा हो रहा है? मैं आप लोगों का चेहरा नहीं देख पा रहा हूँ, बट रियली आई वुड लव टू सी दैट फील. Sir, it was a simple sum. है ना? Yes. And the worst thing that happened with us is we got carried away by the method. है ना? Yes, sir. And दूसरा चीज, a logical thinking, a logical reasoning has got no boundaries. Okay? हमेशा जरूरी नहीं है कि हमको जो मेथड पता है बस वही मेथड ही सॉल्यूशन है. Okay? We can arrive at a solution from multiple ways, multiple dimensions. Okay? And that kind of solutions can come from anywhere. Okay? So we should be mentally ready. Correct? Are we happy? Did we learn something new? Yes, sir. Good. Okay. Important ये है कि we should keep on learning. Okay. And keep on growing. चलो, what we'll do is I want to teach you one more method. Okay. और ये मेथड एक तरह से आप समझ लो कि फाइनल वाला हिसाब रहेगा, बट इंस्टेड ऑफ हम इसको अलग तरह से करेंगे. ठीक है? इसके बाद में ज्यादातर चीजों में वी विल जस्ट ओनली जस्ट फॉर्मुलेट एंड आई विल लीव द solution to you. Okay? A construction company has 4 large bulldozers located at 4 different garages. The bulldozers are to be moved to 4 different construction sites. The distances in miles between the bulldozers and the construction sites are given below. How should the bulldozers be moved to the construction sites in order to minimize the total distance traveled? अभी ये आपको सिचुएशन दी हुई है. ओके? यहाँ पर एकदम सिंपल, बस सिर्फ सीधा सीधा आपको एलोकेशन करके चलना है. करेक्ट? रो मिनिमाइजेशन, कॉलम मिनिमाइजेशन एंड सो ऑन. परफेक्ट ना? Okay, so that's how it will go. Fine. Now I will show you the next method of solving. Okay, this method is available in Excel itself using solver. This is your actually distance matrix. Okay. Now what we are going to do here is we'll create a similar matrix which will be an empty one. Okay. But it would be allocation matrix. That means we will only just show the allocation there. That means if I put a 1 here, that means I am allocating this cell. Okay. So if I put a 1 here, that means I'm allocating this cell. Now to make it visible very clearly, what we'll do is I'll just put a conditional formatting here. Not here, but in this cell so that they get highlighted. So I'll put a conditional formatting there. Are you guys doing it along with me?
Yes, sir. Yes, Yes, sir. sir. Okay, good. So highlight the cells. Okay, I'll go for more rules. I am going to use a formula to determine which cell to be highlighted. And since I have already selected this one, so my whatever conditional formatting I am going to apply will be applicable for it. But this should get highlighted if this cell gets a value 1. So in the formula, what I will do is I will click here. Okay, I will remove the dollar symbols by pressing F4 and I will write equals to 1. Then no format is set, so I will change the format for that particular cell. I will make it make the font bold. Let's make the font color as white, and I will fill that cell with green color. Okay, so it will tell me exactly this is how that cell will look, and all I have to do is just press OK. See, it got highlighted. Now if I remove 1 from here, that highlight is also gone. So now what I need to do is just select this, click on Format Painter and apply that format all across. So wherever I put 1, those particular cells will get highlighted. Are we okay with this? So can you repeat once again? Yes. I'll just remove the formatting from here first. Clear rules. Okay. Since I want this cell to get highlighted, if I put 1 here, so I'll go to first I need to select this cell, go to conditional formatting, highlight cells rules. Instead of selecting anything, because it's a condition based, so I will go more rules, use a formula to determine which cells to format. Okay, click here to enter the formula, and the formula would be if this cell is equal to 1. Okay, but before doing that, I need to just remove the dollar symbols. Okay, नहीं तो क्या होगा, अगर मैं उसको डॉलर सिंबल्स को नहीं हटाऊंगा तो all these cells, when I am going to apply format painter, all these cells will be looking at only just this cell. Okay, so dollar symbol हटा देना है, equals to 1, and I will set a format. ओके, फिल कलर मान ग्रीन कर दिया, फॉन्ट कलर मैंने फॉन्ट बोल्ड कर दिया, फॉन्ट कलर white कर दिया, so that it starts appearing. This is what has been done, and say okay. So once this has got that conditional formatting, just click on Format Painter and apply that format all across to all the cells in your distance matrix. अब मैं इसमें से सारे zeros, सारे allocation हटा दिया तो none of the cells are highlighted, और जहां भी मैं 1 डालूंगा that cell will get highlighted. So it will, I will come to know कि with which cell is getting referred to. Okay, hello. Are we clear up to this? Yes, sir. Okay, अभी इसमें एक और चीज मुझे मालूम करनी है कि what is the total distance traveled by all the 4 bulldozers. Okay, so that will be given by, if I am marking this one here, that means 95. If I am marking this one here, so 95 plus 35, correct? So मुझे उसका summation चाहिए होगा. So what I will do is I'll write it as total distance traveled. अभी अपना objective क्या होगा? Total distance traveled should be minimized, correct? So ये cell में मान लो मैं ले लेता हूँ, and I will write it as equals to sum product of this array into this array and this array.
ठीक है, sum product of distance matrix and allocation matrix. Clear? Now what this will happen, what will happen here is 90 into 0, because this cell is not having anything, 90 into 0 plus 75 into 0 plus 75 into 0 plus 80 into 0 plus 35 into 1 plus 85 into 0 and so on. That is what would be the final outcome of this formula. ये देखिए, correct? Can you see? I'm just putting one here and there and you can see what it is actually referring to. और जैसे जैसे मैं और एक्स्ट्रा डालते जाऊंगा उधर उधर के वो ऐड हो जाएंगे. करेक्ट? यहां तक ओके है? Sir, hello. हाँ. Sir, Yes. could you please again repeat that format painter? How you do that? Okay. That format painter. Yeah. ये सम प्रोडक्ट का ओके है? Yes, yes, sir. Okay. Format painter में this was the cell where we put that formula for conditional formatting, correct? So मैंने इसको ही selected रखा. I just clicked on format painter and then I had applied that format all across to all the cells. Can you see the mouse pointer? It has changed. And just click and leave. आया बराबर? Did you get it? हमें एक सेल को फिल किया ना, बाद में यू आर गोइंग टू फॉर्मेट पेंटर, राइट? हाँ हाँ, जिस सेल में मैंने कंडीशनल फॉर्मेटिंग डाला था वही सेलेक्ट किया, देन आई वेंट फॉर फॉर्मेट पेंटर. फॉर्मेट पेंटर का यूज कैसे है मालूम है? अभी देखिए, जैसे मान लो मैंने यहाँ पर 2 लिखा, ओके, और इसका मैं एकदम से अलग ये कर देता हूँ, से कुछ अजीब तरह का कुछ फॉन्ट यूज करें क्या, ताकि हाँ ये अल्जीरियन था ना, ठीक है. अब यहाँ पर मैंने 2 लिखा तो ये अलग तरह से दिख रहा है. फॉर्मेट पेंटर क्या करेगा, इधर का जितना जो भी फॉर्मेट है, फॉर्मेटिंग है, सेलेक्ट किया एंड इफ आई क्लिक हियर इट विल हैव द सेम फॉर्मेटिंग. It's a wonderful tool to quickly reformat it as the same. ठीक है, क्लियर? अभी So, इसमें प्रॉब्लम होता है एक चीज. हाँ सॉरी, it's not coming, sir. कहीं पर कुछ गड़बड़ हो रहा होगा. ठीक है, एक बार बाद में क्लास के बाद में ना एक बार आप ट्राई करना, नहीं तो अभी ब्रेक के टाइम पर ट्राई करना, ठीक है? Yes, sir, yes. Yes. Once we are through with this numerical, then we'll solve it using that. मतलब उस वक्त ब्रेक के टाइम पर we'll work it out. ठीक है? Others can enjoy their break and we'll work it out. Fine? Okay. I will request you to share your screen at that time. Okay. अब इसका प्रॉब्लम ये होता है कि अभी मैं इधर पर कुछ भी टाइप करूंगा, it is going to use that format. So अगर मुझे उधर से हटाना है तो मुझे यहाँ से पहले इसको क्लियर करना पड़ेगा. Clear formats, clear contents. Okay. So clear all will clear it. अभी वापस से मैं इधर पर कुछ भी लिखूंगा तो it will go in a normal form. Fine. Fine. अब चीज क्या है कि this becomes my objective function, which talks about exactly what is the total distance traveled. Now what we'll do is we'll go to data tab. You will find solver here. Is there anybody who is not able to see solver there? Then they will have to activate it. हैं कुछ लोग जिनके पास सॉल्वर नहीं है? सर एक्चुअली क्या था, सॉल्वर जो था ना वो 15 डेज के लिए ही था.
नहीं, ऐसा नहीं होता है। सॉल्वर एक्सेल का मेन पैकेज है, सो वो हमेशा ही रहता है। देखना पड़ेगा। एक्टिवेट करना पड़ता है, ठीक है। आई विल शो यू हाउ टू एक्टिवेट इट। ओके सर। क्लिक ऑन फाइल, go to options, go to add-ins, after add-ins you will have to go to Excel add-ins and click on go. When you click this, you see this dialog box which has the add-ins which are available from Microsoft itself. So just tick mark the solver add-in. Okay, मैंने analysis tool pack भी कर रखा है। आप लोगों को जो जो कुछ चीजें जो करनी पड़ती है ना, जिसके लिए अलग से प्लगइन्स वगैरह डाले जाते हैं, तो कुछ चीजें तो ऑलरेडी एक्सेल में इनबिल्ट दी हुई हैं, हमको सिर्फ एक्टिवेट करना होता है। तो अगर हमको ये पता है, so then we don't need external plugins. External plugins will further strengthen the capability of Excel. So now what I'm going to do is just press Excel. Okay, you will find solver here. ये डेटा एनालिसिस मैंने साथ में कर रखा है, इसमें भी बहुत कुछ आप कर सकते हो। अगर आप देखोगे ना, ये देखिए स्टैटिस्टिक्स का बहुत सारा काम इधर पर अपने आप ही होता है, ठीक है। एनीवे, वी आर नॉट गोइंग टू डू स्टैटिस्टिक्स हियर, दैट इज नॉट आवर ऑब्जेक्टिव। आवर ऑब्जेक्टिव इज टू सॉल्व operations research related problems. So we'll click on solver. What is solver needs? Solver will ask you certain question which needs to be answered. For example, setting the objective. ऑब्जेक्टिव मतलब कौन सा सेल आपका ऑब्जेक्टिव वैल्यू है, जस्ट गो एंड क्लिक देयर। अगर आपने पहले ही उसको क्लिक किया था तो वो बाय डिफॉल्ट पहले से ही लेके इधर दिखाता है बिफोर क्लिकिंग सॉल्वर। अगर वो क्लिक था तो इट विल ऑटोमेटिकली टेक इट। नाउ योर ऑब्जेक्टिव इज टू मैक्सिमाइज और मिनिमाइज। इट इज टू मिनिमाइज the total distance traveled. So this objective function value is to be minimized. Now, by changing variable cells, which cells are to be changed? The values in these cells are to be changed. So just इधर पर क्लिक करके इसको आप सेलेक्ट करोगे तो अपने आप ही उसका रेफरेंसेस यहाँ पर आ जाता है। Then the next thing is you have to add the constraints. What are your constraints? अभी हमने इधर पर constraints कुछ भी define ही नहीं किए हैं, तो we'll have to close this and again come back. Okay? अभी allocation matrix ये word को मैं उठा करके इधर पर रख देता हूँ so that I can put the constraints here. Now, when we are looking at assignment problem, you will have only just one allocation in a row or a column. So that means बाकी का सब कुछ zero रहेगा, और यहाँ पर का अगर मैं sum लूंगा for all these cells, it should come as equal to 1. Okay, so इनको सबको बराबर से सेट कर देते हैं। It would be same for all the rows. Similarly, for all the columns also, if I look at the sum of that particular column, it should be equal to 1. Correct? So हम उसको भी for all the columns it should be equal to 1. Now what we are going to do is I will put 1 here, which I will use as a reference to compare whether I am getting 1 here or rather ये दोनों values equal है क्या. Okay, ये दोनों values equal हैं क्या. Similarly, I will have to put 1 there to check whether the row summation is also equal to 1. So this is for only for comparison. Okay. Similarly, ये side वाला भी it is only just for comparison. Clear? Now, if I don't have any allocations here, तो हट गया. If I do by mistake, I do 2 allocations in that column,
So it will have 2 which is not equal to 1. So that will not be the right thing. Okay. So I'm going again back to solver. I'll click on solver. Now I will start adding the constraints. What would be the constraints? Cell reference per clicked. These values should be equal to these values. इसी तरह से हमको कॉलम के लिए भी ऐड करना पड़ेगा. So click on add. This has got added. These values should be equal to these values. Add. The third constraint is the values in these cells should be binary. Binary means either 1 or 0. Once we have added all the 3 constraints, just click on OK. Is everybody along with me? I'm purposely doing it slow so that everybody is able to do it along with me. करना बराबर? कोई कुछ नहीं बोल रहा तो I will assume yes. Sir, can you show again from the solver wala part? And starting when you took all the 1 1 1 1, right? कर बताता हूँ मैं. इसमें you need to just ensure that this is tick marked. This is tick marked correctly. That means all the values should not be negative. So should be positive, either 0 or positive value. And solving method selected should be simplex LP. And after this, if we just press solve, it will give me the solution. ओके अब इसमें 1 1 कहीं कहीं पर है, वो फटाक से दिख नहीं रहा है, zeros ज्यादा दिख रहे हैं. So just do a conditional formatting. मैं Sir, आपने आपको 1 diagonally लिया ना sir, like horizontally and vertically. नहीं क्यों लिया वैसा sir? Can you repeat? वैसा नहीं लिया है इसने, देखो अलग तरह से लिया है. ठीक है. So just conditional formatting में highlight cells rules equal to 1 कर दीजिए तो आपको वो ones वाले अलग से दिखने लगेंगे. Okay, I will just show you everything again. I'm just removing these values. Okay, so आपका यहाँ पर आपने sum वाला फॉर्मूला डाला है, so summation of the column. Okay, सभी के लिए वैसे ही है, summation of the column. यहाँ पर summation of the row, हर एक sum का. Okay, हर एक sum का summation of the row, and we are putting just ones here. There is no formula, just one लिखा है, so that I can compare these values with these values. क्योंकि एक्सेल को तो और कुछ नहीं समझता ना, उसको बस सिर्फ इतना मालूम है कि ये 0 या 1, ठीक है, या जो भी नंबर लिखेंगे. सो समेशन कितना आ रहा है, we will be checking it here and we are going to compare it with the values which we have indicated here. यहाँ पर आपका सम प्रोडक्ट का फॉर्मूला आना जरूरी है. ओके, इट शुड बी summation of this array, sum product of this array and this array. ठीक. After that we'll click on data, we'll go to solver. I'm just removing all the earlier values, so I'll just reset all. Everything is gone. Okay, my objective function would be this cell. Okay, objective is to minimize. By changing variable cells, the values in these cells are to be changed. Excel वो सबको change करके देखेगा. Okay, the constraints to be added are the values in these cells should be equal to values in these cells. Add values in these cells are supposed to be equal to values in these cells. Add, and the third constraint is all the values in these cells should be either 0 or 1. That means they should be binary. Click on
Okay. After that, just ensure that this is tick mark. That means all the values in these cells have to be either 0 or greater than 0, but cannot be negative. So make unconstrained variables non-negative. That means either 0 or positive. And select the method simplex LP and click on solve. Okay. यहाँ तक ओके है? क्लियर? Example number 3. To simulate interest and provide an atmosphere for intellectual discussion, the finance faculty in a management school decides to hold special seminars for 4 contemporary topics. Okay. First topic is leasing, second portfolio management, third private mutual funds, swaps and options. Okay. So these are the topics. Such seminars would be held once per week in the afternoons. However, scheduling these seminars, one for each topic and not more than one seminar per afternoon, has to be done carefully so that the number of students unable to attend is kept to a minimum. When I say number of students unable to attend is kept to a minimum, so that means I want maximum attendance. Okay. A careful study indicates that the number of students who cannot attend a particular seminar on a specific day is as follows. Who cannot attend? आपको ये दिया हुआ है. Find an optimal schedule of the seminar. Also find out the total number of students who will be missing at least one seminar. So now what I want is, anyway, आपको table तो already बना हुआ दिया हुआ है. Okay. What would be your objective? Maximization or minimization? Hello? Am I not Minimization, audible? sir. It's minimization or maximization? Minimization. Minimization. Very good. It would be minimization. Okay? And one request to all of you. Okay. Please don't hesitate to give answers. ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा? You may be wrong. Okay? But यार, आप लोग सीख रहे हो, तो आप गलती नहीं करोगे तो कौन करेगा? मुझे तो शर्म आनी चाहिए मैं जब गलतियां करता हूं तो. You don't need to be afraid of committing mistakes. ठीक है? बिंदास करो. This is the time when you can do that. ये सब, let me just clear it. I have created a copy of it and now we'll be working around here. Before I paste it there, let me paste it first here so that the format is not lost. If I would have pasted it directly here, this is how it would have appeared. Okay, so gadbad ho jati thi. That's the reason why I have pasted it in Microsoft Word, and now I will copy it from here and then I will paste it in this. Still थोड़ा सा Sir, one गड़बड़ है. request, sir. अभी इसमें हम क्या करेंगे? How are we going to go about? Is there anything which is a problem here? Objective would be to minimize, or rather minimize the, correct? Minimize the absenteeism, correct? Just a second, hold करना please. आप मुझे बताइए इसको कैसे करेंगे? Are the number of rows and columns equal?
how are we going to go about this unbalanced problem? Sir will create a dummy column, right? Yes, we'll create a dummy column. Okay, so if we are doing it manually, we will create a dummy column. What would be the values here? Sir, 0. Zeros. We will use zeros there. Okay, now this becomes balanced. So जहां भी number of rows or columns अगर equal ना हो, so you will have to balance it. Now this has become a balanced problem. Okay, so step 1, convert it to a balanced problem by adding a dummy row or column as per the requirement. Okay, the values that you are going to put in it would be 0, but in majority of the cases we will put 0, but we'll come across a situation wherein we don't put zeros also. I will talk about it, but in my later class. Okay, now इसके बाद में फिर क्या करेंगे? Next thing is, since this is minimization only, okay, तो हम directly we can go ahead with step 2, row minimization. Step 3, Column. Minimize. column minimization, and then Yes, sir. step 4, allocation. Will you guys take a while and do it? 5 minutes should be able to finish. Yes. Yes, sir. Please. Sir, I have a doubt. Yes. Sir, why did we take the dummy lectures as 0? Because अगर 0 होगा तो वो तो automatically वही allocate हो जाएगा. सबसे पहले allocate हो जाएगा Yes, sir. और उसके बाद में बाकी का allocate होगा. So वो भी अपने आप ही total objective आपका minimize करने का है ना. So even the other cells which will get selected would be minimum value. And So if I would we will not take dummy lectures in the end result. no, when we get the end result, that time we will not consider dummy lecture. Only just what will happen is the allocation that you are getting in a dummy lecture column on that particular day, lectures will not be scheduled. Okay, sir. Thank you. And sir, in row minimization, we will take the least number as 20, right, and not as 0. Uh, we will be taking it as 0. Okay, sir. So here in this particular case, you will not start. You will not start with row minimization because row minimization will not make any changes. Yes, sir. So you will have to start with column minimization directly. क्योंकि every row has got a 0, correct? Yes, sir. The row minimization is coming same. So row minimization will not have any effect.
जो डमी रो है सर, उसको पूरा कवर करने की जरूरत नहीं है ना मतलब मैं समझा नहीं। सर, like when we are covering all the zeros after column and minimization, तो डमी वाले पार्ट को नॉर्मली रखना है ना, बाकी जैसे फिगर्स को हम ट्रीट कर रहे हैं। हाँ, आप उसको डमी को भी एक नॉर्मल सेल की तरह ट्रीट करोगे, कुछ ऐसा डिफरेंस नहीं आएगा। इट वुड बी ट्रीटेड नॉर्मली। सर डन। यूजिंग सॉल्वर। नो सर, मैन्युअली। ओके, तो मेरा लैपटॉप काम नहीं कर रहा, मतलब एक्सेल वाला। कोई बात रिपेयर नहीं, कर। अच्छी बात है, इसलिए आपने मैनुअली अच्छे से कर लिया। दैट्स मच मच बेटर। ओके, व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु आर एब्सेंट? अच्छा, वो करना बाकी है, सम लेना होगा ना, समेशन ऑफ ऑल द cells, allocated cells. एलोकेशन क्या मिले हैं? टोटल 70 है आई गेस। कितना है? 70। 70। वेरी गुड। सो दैट मीन्स आपको परफेक्ट आंसर मिल गया है। यस सर। एंड लेक्चर आपका किस दिन नहीं हो रहा है? डमी डमी लेक्चर वाले में कहाँ पर आया है एलोकेशन? इसके अंदर ट्यूसडे। ट्यूसडे। वेरी गुड। Challenge would be in terms of formulating this one. How will you do this? So rate divided by number of multiplied by number of pages. आपका इधर पर क्या है? पेमेंट किस बेस पर होने वाला है? सॉलिसिटर्स फर्म एम्प्लॉयज टाइपिस्ट ऑन आर्ली पीस रेट बेसिस फॉर देयर डेली वर्क. There are 5 typists and their charges and speed are different according to an hour. अब इनको hourly basis पर पेमेंट हो रहा है. ओके, सो हमारा ऑब्जेक्टिव वुड बी कॉस्ट रिडक्शन. करेक्ट. सो हमको उस हिसाब से देखना होगा कि हर एक आदमी को वो जॉब करने के लिए कितना टाइम लगेगा और उस टाइम के हिसाब से उसको पेमेंट कितनी करनी पड़ेगी. करेक्ट. तो सर पहले टोटल पेजेस टाइप्ड निकाल लेंगे आई गेस। हाँ, सो पहले आप नंबर ऑफ पेजेस टाइप नहीं, उनको कितना टाइम लगेगा वो निकालोगे. तो नंबर ऑफ पेजेस डिवाइडेड बाय देयर स्पीड.
Okay, that is number of pages Okay. typed per hour will tell you how many hours they will require. So if I am giving job P to typist A, so 199 divided by 12 will give you that many number of hours. अब यहाँ पर कैसा है कि वो बंदा अगर 4 hours 5 minutes के लिए भी काम करेगा, so he will get paid for 5 hours. Okay? ये देखिए यहाँ पर क्या हुआ है. The typist is paid for a full hour even when he works for a fraction of an hour. So that means for 4 hours 5 minutes will be counted as 5 hours or into the rate per hour. तो किसी को 5 रुपए देना पड़ेगा, किसी को 6, किसी को 3, किसी को 4, किसी को 4. अभी ये ऐसा क्यों है? Based on their experience and the quality of work that they may be delivering. Okay? या फिर आपने कॉन्ट्रैक्ट उनके साथ कैसे किया है? फाइन. अब इसको कैसे करेंगे? फर्स्ट इज वी नीड टू फाइंड आउट किसको कितना पैसा देना पड़ेगा. This is the information that we have. Correct? आपका ये क्या होगा? रो और कॉलम. Typists. So they come in column, na, typist. टाइपिस्ट को हम कॉलम में ले लेते हैं एंड जॉब्स हम यहां पर ले लेंगे रोज में. फाइन. अब Yes, हर sir. एक जॉब के लिए नंबर ऑफ पेजेस दिए हुए हैं. सो आई विल जस्ट पुट दैट आल्सो हियर so that it becomes easy for me to do my calculations. This is their speed. तो मैंने स्पीड इधर डाल दिया. उनका रेट that means charges. Correct? अब when I am allocating job A, job P to typist A, तो उसको कितना ये लगेगा टाइम? 17 hours. Equals to 199. करेक्ट. सो मैं इसको फ्रीज कर लेता हूँ. आई विल फ्रीज द रो डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ पेजेस टाइप पर आवर, तो मतलब उसका टाइपिंग स्पीड. आई विल फ्रीज द कॉलम देयर 16.58. इसको इधर पर ऐसे लिख देते हैं. सो
So it is easy for us to understand, है ना? Correct? And we can say number of pages, or we can also call it as job size. Fine. So 16.58, matlab this will not be 16.58, it has to be 17, है ना? So formula में थोड़ा सा और changes करना पड़ेगा. So we'll say round up, comma. तो राउंड अप क्यों लिया सर? सॉरी सर फॉर द इंटरप्शन. क्योंकि हायर साइड में राउंड करना है. अगर मैं इसको राउंड यूज करता था तो 16.4 would have got changed to 16. राउंड अप कर रहा हूं तो वो 17 पॉइंट मतलब वो 17 ही हो जाएगा, 16.4 भी. There is another formula which we can use, which is called as seal, CEIL, floor and seal. अभी देखो ये मैंने राउंड अप किया, उसकी जगह पर अगर मैं CEIL भी यूज किया होता, that is sealing. Okay. So उससे भी अपने को अपना काम हो जाता था. एंड किसी भी फॉर्मूला के बारे में थोड़ा सा डिटेल्स चाहिए तो जस्ट क्लिक ऑन दिस एफएक्स एंड यू विल बी एबल टू सी व्हाट इट डज. ओके, राउंड्स अ नंबर अप टू द नियरेस्ट मल्टीपल ऑफ सिग्निफिकेंस एंड हम उस हिसाब से वी कैन इंडिकेट व्हाट वुड बी द सिग्निफिकेंस. ओके, सीलिंग में अगर हमने ये चीज नहीं भी डाली तो उधर पर गड़बड़ हो जाएगा. ठीक है, यहीं पर अगर फ्लोर यूज करता था तो वो लोअर साइड में ले जाता था. फाइन. Sir, but how will we do this manually? हाँ, मैनुअली आप करोगे 199 डिवाइडेड बाय 12, आपको मिलेगा 16.58. फिर आप उसकी जगह पर लोगे 17 इक्वल्स टू 17 इनटू द चार्जेस पर आवर, दैट इज 5. सो आपको मिलेगा 85 रुपीज. सो आपको यहाँ पर फिर 85 आएगा. ओके, इसको 0 नहीं, इधर पर 1 चाहिए होगा. ओके, राउंड अप अगर हम यूज करते हैं तो हम सीलिंग की जगह पर राउंड अप अगर हम यूज करेंगे तो हम 0 लिख सकते हैं. तो इसमें भी उसमें आपने अगर रोज ही फिक्स किया है ना सर अभी फिलहाल? हाँ हाँ, मैं तो रोज एक्चुअली इसके लिए मैंने रोज फिक्स किया हूं और इसके लिए मैंने कॉलम फिक्स किया हूं. द बेस्ट पार्ट ऑफ डूइंग इन एक्सेल इज आपको बस सिर्फ उसके बाद में ना इसको बस सिर्फ ये खींचने की जरूरत पड़ेगी, बट इसके बाद में एक और चीज करना है, टू मल्टीप्लाई इट बाय रेट. सो इनटू 5. अभी देखिए यही सेम वैल्यू मिली 85 which I have already got it using the formula. After that all I need to do is just simply drag it. अब कहीं पर कुछ तो गड़बड़ आ रहा है. क्या हुआ? हाँ, ये देखिए किसी पर भी आप क्लिक करोगे तो आपको मालूम पड़ता है कि गड़बड़ क्या हो गई. ठीक है. So when you are working around with Excel, that time you need to be cautious about that. Okay. यहाँ पर मुझे कॉलम को फ्रीज करना पड़ेगा. अब यही मैनुअली अगर करने जाते तो आपको बहुत सारे कैलकुलेशंस करने जाते एंड पढ़ते थे और उधर पर आपका टाइम जाता था. एट द सेम टाइम मिस्टेक के चांसेस बढ़ जाते हैं. ओके. सर मतलब आपने जो D9 है उसका कॉलम फिक्स किया ना और बाकी का D11 का रो ही रखा. ये देखिए मैंने इसके लिए ये वाला जब सेलेक्ट किया तो मैंने इसका रो फ्रीज किया. ओके. क्योंकि यही वैल्यू मुझे हर बार हर एक सेल में जरूरत पड़ेगी. लेट अस से इफ आई एम लुकिंग एट typist B getting assigned job P,
सो उसमें क्या होगा 199 divided by his speed which is 14 into his charges 6. तो जब मैं ड्रैग करूंगा so I want this row to be the same and these columns to be the same. सर बट 90 नहीं आएगा, हम लोग को 84 आ रहा है, आपको 90 आ रहा है ना। बी रो एंड पी कॉलम में यू आर गेटिंग 90, बट व्हेन वी आर डूइंग इट मैनुअली वी आर गेटिंग एन 84. Okay, we will do it now. Equals to 199. ठीक है, आपका जॉब साइज हो गया डिवाइडेड बाय 14. आपको कितना मिला 14.24. मतलब दिस विल बी टेकन एज 15 into 6 rupees 90 आएगा ना. Yes sir, actually I did some miscalculation, sorry. हाँ, this is where Excel can help you in saving a lot of time. Okay, अगर आपको फॉर्मूला आपको बस से बराबर से सेट करना है, एक सेल में आपने फॉर्मूला बराबर सेट किया, उसके बाद में ऑल यू नीड टू डू इज जस्ट ड्रैग इट अक्रॉस. यू डोंट नीड टू वरी अबाउट कैलकुलेशंस, वो सब कुछ एक्सेल करेगा. आपको सिर्फ उसको समझाना है कैसे करने का है. ओके, मेरा मानना यह है कि कामचोर बनो. ये सब काम एक्सेल अच्छे से करता है, गिव इट टू हिम. और हम लोग अपना टाइम डालेंगे इन एनालाइजिंग थिंग्स, अंडरस्टैंडिंग थिंग्स, फॉर्मुलेटिंग थिंग्स. इसके बाद में सॉल्व करना आसान है. ऑब्जेक्टिव वुड बी मिनिमाइजेशन और मैक्सिमाइजेशन. मिनिमाइजेशन सर. हाँ, सो ऑब्जेक्टिव वुड बी टू मिनिमाइज. सो इसमें बट आपको जो दिया हुआ है वो क्या वैल्यूज दी हुई है. क्या कॉस्ट वैल्यू? दिया हुआ है कॉस्ट सर आपका, हाँ है ना. हाँ. तो अभी हम डायरेक्ट सीधा मिनिमम, क्योंकि कॉस्ट दी हुई है तो हम लोग डायरेक्ट मिनिमाइजेशन कर सकते हैं. यहीं पर अगर मान लो ये दिया होता कि ये उनसे की गई मिस्टेक्स है तो भी मिनिमाइजेशन होता था. बट यहीं पर अगर हम ये बोलते कि ये उन लोगों ने जो काम करके दिया उसमें इतना इतना प्रॉफिट हुआ, सो मैक्सिमाइजेशन करते थे. ठीक है. सो डिपेंडिंग अपॉन द टाइप ऑफ डेटा दैट योर table indicates, your objective will be changing. ठीक है, क्लियर. मैक्सिमाइजेशन का कैन यू रिपीट, क्या बोले आप? लाइक अभी since what it indicates is a cost, okay, this is your cost table. Fine. So cost table will always be minimized. In case if it would have been defects, किसका कितना डिफेक्ट्स आया, तो डिफेक्ट्स भी हम मिनिमाइज करते थे. यहीं पर अगर मान लो ये दिया होता कि आपको कितना प्रॉफिट होता या कितना रेवेन्यू आता इफ द जॉब हैज बीन द जॉब पी हैज बीन गिवन टू टाइपिस्ट ए, इतना रेवेन्यू आता. ओके, डिपेंडिंग अपॉन द क्वालिटी ऑफ द वर्क डन बाय देम. सो हम फिर वो रेवेन्यू, फिर ये दिस वुड हैव रिफ्लेक्टेड रेवेन्यू टेबल. देन ऑब्जेक्टिव वुड हैव बीन मैक्सिमाइजेशन. सो आप फिर इसको इन्वर्स करते थे और फिर दैट इज अपॉर्चुनिटी लॉस मैट्रिक्स क्रिएट करते थे एंड देन यू वुड हैव वर्कड आउट. फाइन. यस सर. Yes sir. ओके,
So it is already 11:15. We will have to stop there only. Just a second. Let me download the attendance sheet. Okay. And one request with all of you, I will be sharing assignment sheets today. So you can start working on those assignments because all the methods have been already taught to you. Okay. अभी the only thing that is required is इसमें जितने भी न्यूमेरिकल्स है ना सब उतने ही अलग अलग टाइप के हैं. ओके. कोशिश करके देखो इफ यू कैन डू दिस. फाइन. ये सेम टाइप का है जैसा हम लोगों ने वो लेक्चर शेड्यूलिंग का किया था. ठीक है. ट्रेनिंग शेड्यूल करने थे ना, उससे मिलता जुलता है. एनीवे हम विल बी looking at these in our next class.